Chapter 9, Heredity and Evolution. Second law of inheritance, law of independent assortment. Mendel's second law of inheritance or law of independent assortment states that in the inheritance of more than one pair of traits in a cross simultaneously, the factors responsible for each pair of traits are distributed independently to the gametes. That means it doesn't matter whether 2 genes, 3 genes, or more than that are transmitted from one generation to another generation simultaneously. Each and every gene has its own impact. यानी कितने भी जीन्स हो, चाहे वो एक साथ ट्रांसमिट हो रहे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, हर जीन का अपना इम्पैक्ट होता है, लेकिन वो जीन किसी दूसरे जीन पर अपना इफेक्ट नहीं डालता. Like we have discussed in first rule of inheritance that only dominant genes will express during F1 generation, but recessive genes do not express during F1 generation. Similarly here, dominant genes would express, but recessive would not express. But it is important to note that dominant of one gene would not इफेक्ट द रिसेसिव ऑफ अनदर जीन. यानी एक जीन का डोमिनेंट दूसरे जीन के रिसेसिव पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा. हर जीन अपना इफेक्ट इंडिविजुअली शो करता है. यानी एक जीन का डोमिनेंट दूसरे के रिसेसिव को नहीं दबा सकता, वो अपने ही रिसेसिव के इफेक्ट को दबा सकता है. एंड दिस वाज एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस. एंड ये जो सेकेंड लॉ था इनहेरिटेंस का, वो मेंडल ने डाई हाइब्रिड क्रॉस की हेल्प से एक्सप्लेन किया. डाई हाइब्रिड क्रॉस मींस इन अ क्रॉस इन विच 2 फैक्टर्स वर कंसीडर्ड. एक ऐसा क्रॉस, एक ऐसा पॉलिनेशन या एक ऐसा फर्टिलाइजेशन करवाया गया 2 प्लांट्स के बीच में जहां पर 2 कैरेक्टर्स, 2 ट्रेट्स को कंसीडर किया गया था. फॉर एग्जाम्पल हियर सीड कलर एंड सीड शेप. तो सबसे पहले उसने क्या शो किया था, एक ऐसा क्रॉस करवाया ऐसे 2 प्लांट्स के बीच में जिसमें सीड कलर और सीड शेप में उसने डिफरेंस कंसीडर किया था. सो हियर ही हैज टेकन 2 प्लांट्स. He has taken 2 plants, 2 pure breeding lines. First, this plant having a seed which is round and yellow. And later on it was concluded that round and yellow were the dominant traits. And he has taken another plant with a seed wrinkled and green feature. तो wrinkle और green बाद में क्या पता लगा था कि ये क्या थे, recessive characters थे. Now he has taken these 2 plants and cross pollinated them. So these are the 2 gametes which are produced by these are the 2 gametes which were produced by these 2 type of plants. And now these gametes are cross pollinated, and this was the result of, so this was the result of F1 generation, which was all round and yellow. तो F1 generation में सिर्फ जो 2 dominant traits थे वही 2 traits नजर आए थे. तो dominant traits कौन कौन से थे, एक round shape और दूसरा yellow color. So this was first generation F1 generation which was having round yellow seeds. Now what he has done, like he has done in first monohybrid cross, then he has self pollinated these plants. अब इन 2 plants में क्या करवाया गया, self pollination. Now what kind of gametes will be produced now? Now this plant, which is the F1 generation, it will produce 4 kind of gametes. One parent would produce these 4 gametes, 1, 2, 3, and 4. And another from the other parent, these 4 gametes will be produced, 1, 2, 3, and 4. Now these are the kind of gametes which are produced by the 2 plants.
Now what will be the resultant? यानी अब इन दोनों से next generation क्या होगी? There will be fusion of gametes. So these would be the combinations. This would give rise to capital R, capital R, capital Y, capital Y. Similarly here, capital R, small r, capital Y, capital Y. So like this, these would be the 16 combinations. Now look at the color and the shape of the seed. सबसे पहले देखिए, this is capital R, capital R, capital Y, capital Y. That means this is homozygous dominant. दोनों ही genes यहाँ पर homozygous थे, dominant. तो obviously dominant character will show and the seed would be of yellow and round shape. Now here capital R, small r, capital Y, capital Y. That means एक gene का यहाँ पर dominant है, दूसरे का भी dominant, तो obviously दोनों dominant features यहाँ पर नजर आएंगे. Here, 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 this and there. So आपके यहाँ पर all of these are having dominant characters, क्योंकि एक जीन का dominant या तो homozygous में या heterozygous condition में available है. Now look at this plant, this one. This is having small r, capital Y combinations. अब देखिए यहाँ पर जो second जो law उसने बताया था, अब यहाँ पर समझिए ध्यान से. एक जीन का रिसेसिव है तो दूसरे का डोमिनेंट है. अब अगर हम ये मानकर चले कि एक डोमिनेंट रिसेसिव को दबाएगा, चाहे वो अपना हो या दूसरे का हो, तब तो ऐसा कंडीशन होना ही नहीं चाहिए था. बट इस लॉ ने क्या इंडिकेट किया था कि एक जीन का डोमिनेंट दूसरे जीन के रिसेसिव पर कोई इफेक्ट नहीं डालता. ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एक जीन का तो डोमिनेंट है, यानी कैपिटल वाई, एक डोमिनेंट कैरेक्टर, एक डोमिनेंट जीन है, दूसरे का रिसेसिव है. शेप के लिए क्या है, रिसेसिव जीन है यहाँ पर, रिंकल्ड के लिए. सो सीड कैसा आया, रिंकल्ड आया, यानी एक रिसेसिव और एक डोमिनेंट कैरेक्टर यहाँ पर एक्सप्रेस कर रहा है. ऐसा नहीं कि एक डोमिनेंट है तो दूसरा भी डोमिनेंट ही रहेगा, ऐसा नहीं है. तो यहाँ पर एक रिसेसिव तो एक डोमिनेंट कैरेक्टर यहाँ पर शो हो रहा है. दैट शोज कि एक जीन का डोमिनेंट दूसरे के डोमिनेंट या रिसेसिव पर कोई इफेक्ट नहीं डालता. सिमिलरली हियर, यहाँ पर भी ऐसा ही है, एक जीन का डोमिनेंट है तो दूसरे का रिसेसिव, तो रिसेसिव वाला कैरेक्टर यहाँ पर शो हो रहा है इररिस्पेक्टिव ऑफ द अदर डोमिनेंट जीन. अगेन हियर, सो दीज थ्री वर द seeds which were yellow but wrinkled. एक डोमिनेंट तो एक रिसेसिव कैरेक्टर शो हो रहा था. Okay, now look at here. This seed, this is having one dominant and one recessive again. अब यहाँ पर एक जीन का डोमिनेंट है तो दूसरे का रिसेसिव. बट यहाँ पर फिर से वही कि एक जीन डोमिनेंट है दूसरा रिसेसिव, वो दूसरे जीन के रिसेसिव पर कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा है. यानी कि एक डोमिनेंट है तो दूसरा रिसेसिव भी यहाँ पर एक्सप्रेस कर रहा है. इसलिए एक डोमिनेंट तो दूसरा रिसेसिव फीचर यहाँ पर शो हो रहा है. इसलिए सीड कैसा है यहाँ पर, ग्रीन, जो कि क्या है, एक रिसेसिव फीचर है, और राउंड जो कि एक डोमिनेंट फीचर है. सिमिलरली दिस वन एंड दिस वन. So these three were having one dominant and one recessive character. And this last one, this last is having both recessive. यहाँ पर homozygous recessive condition तो obviously recessive ही रहेगा. So this seed is of green wrinkled type. Okay, so from all these things, what have you understood? आपने क्या देखा, बताइए. From this we have understood that एक जीन का डोमिनेंट अपने ही रिसेसिव, अपने ही काउंटर पार्ट पर इफेक्ट डाल सकता है, बट दूसरे जीन का रिसेसिव है या डोमिनेंट है वो उस पर इफेक्ट नहीं डालता. यानी हर जीन अपना इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन शो करता है इररिस्पेक्टिव ऑफ अदर जीन. सो फ्रॉम दिस व्हाट काइंड ऑफ कॉम्बिनेशंस ही गॉट, फिनोटिपिक रेशियो क्या है यहाँ पर, फिनोटाइप. नाउ व्हाट इज द फिनोटाइप हियर, देखिए कैसा फिनोटाइप है. सबसे पहले आपके येलो और राउंड सीड्स कितने हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9.
नाउ 3 कैसे है आपके 1 2 3 कैसे है रिंकल्ड येलो और 3 कैसे है राउंड ग्रीन एंड एक लास्ट कैसा है रिंकल्ड ग्रीन. So what is the phenotypic ratio here? 9:3:3:3:1. यानी हर जीन अपना अपना इंडिविजुअल एक्सप्रेशन शो करता है इररिस्पेक्टिव ऑफ अदर जीन्स डोमिनेंट और रिसेसिव. दूसरा जीन डोमिनेंट है रिसेसिव है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन विल बी शोन बाय ईच एंड एवरी जीन. सो दिस वाज द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कि कितने भी जीन हो. अब हमें पता है कि एक क्रोमोसोम पर कोई एक जीन तो होता नहीं या दो होते नहीं. देयर आर नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट ऑन अ सिंगल क्रोमोसोम. So each gene has its own expression, has its own impact on the characters. तो हर जीन अपना अपना individual impact show करता है, irrespective of the effect of other gene. So this was the second law of inheritance. Again, this is shown here. So the phenotypic ratio is phenotype like we have discussed, appearance, features. यानी क्या आपको नजर आ रहा है, कैसा नजर आया आपको सीड. ठीक है, तो 9 आपको कैसे नजर आए राउंड येलो, 3 आपको राउंड ग्रीन और 3 कैसे नजर आए रिंकल येलो और 1 कैसा नजर आया था रिंकल ग्रीन. एंड दिस शोज that each and every gene has its own expression irrespective of the other gene. So these were the laws of inheritance which were given by Gregor Mendel. Now the sex determination in human beings based on these laws of inheritance, as we have discussed in our junior classes also, and you all know that human beings have 23 pair of chromosomes, or they have in total 46 chromosomes in the nucleus of each cell. Out of these 23 pairs, there is a pair, that means 2 chromosomes are called as sex chromosomes. These are considered as X and Y. The female has 2 X chromosomes. अब हम इसको क्या कहेंगे homozygous condition. अब ये homozygous है ना, दोनों जीन्स एक जैसे है. So females has 2 X chromosomes, but male has 1 X and 1 Y chromosome. यानी females कैसी होती है homozygous, but male कैसे होते हैं heterozygous, X and Y. The sperms and the eggs have one set of 6 chromosomes. Some sperms have X and some have Y chromosome. But all eggs will be having X chromosome. समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है? Look at here. So this is male which is having X and Y chromosome. Here. And girls, they are having homozygous condition. They are having 2 X chromosomes. Now what will be the kind of gametes? So sperms will be either X or Y. या तो X gamete होगा या Y gamete होगा here. Either X or Y. But females will be having only X kind of gamete. Now what will be the combinations? Maybe ये वाला X इस X के साथ combine करे और X would combine with Y. So these will be the 2 combinations. यही 2 combinations हो सकती है. Whether X combined with the Y or this X combined with another X which comes from the male member. So the what will be the results if X combines with X? यानी फिर से homozygous condition हो जाएगी. What will be the child? What will be the sex of child? That will be female. And if X combines with Y of the male, so the sex of the child will be boy. This is how sex determination happens in human beings. That means the sex of the child completely depends on the father. That means sex of the child completely depends on the chromosomes which comes from father. So if a sperm having X chromosome fuses with an egg having X chromosome, the child will be a girl. And if the sperm having Y chromosome fuses with egg having X chromosome, the child will be a boy. This is what sex determination in human beings. Thank you.